are live now. Welcome to Vyapaar Jagat TV once again, and I wish a splendid afternoon to everybody here who's watching us, who is on board. We have Dr. Gitika Saluja, who would be moderating the entire session. We all have a hidden passion, and that passion direct relates us to certain hobbies or certain work which we are engaged with in our free times. And we have passionpreneurs on board with us who would who have turned their passion to paisa. Passion to पैसा, because पैसा is the need. पैसा बोलता है, पैसा ही दुनिया में अभी इकलौती चीज है जो पूजा जाता है. And here passionpreneurs will guide us more how their journey and how they overcome their challenges, और आगे उन्होंने पैसे कैसे बनाए और पैसा कैसा बोलता है उनकी जबानी. Dr. Gitika Saluja would be moderating, as I told, but let me introduce Dr. Gitika Saluja. She is an experienced center head with a demonstrated history of developing personal excellency for professional excellence. Curriculum designing and skills and content development using cooperative learning pedagogy. She is a facilitator for development of communication skills, soft skills, behavior management, and strategic planning and entrepreneurship. Having a degree of doctorate of philosophy in education, a keen desire to nurture knowledge creators and creating an ecosystem of cooperation rather than competition. Welcome, Dr. Gitika Saluja. It's an honor to have you here on board, and please take the charge of the discussion. Thank you, Jalpan. Thank you so much. So today we are going to have a wonderful session which talks about passion, because being an educator, I always understand that passion is so important. We always tell the kids, when they are lost, what career should I choose? First question always comes in mind is, what is your passion? And the child feels, passion? Ye kya hota hai? So, the thought process comes is always work around your passion. And it's not about only working. When it comes to parents, they say, passion se kya hota hai? Paisa chahiye. Only passion doesn't work. So this is a wonderful bridge which we are going to cross today between passion to paisa. Yes, why it is important to follow your passion. Passion is your heart. And why it is important? Yes, in life, money is required. But हर बार पैसा बोलता नहीं है. दिल भी बहुत कुछ बोलता है. और जहां दिल नहीं है, वहां अगर पैसा आ जाता है, तो बहुत देर तक टिकता नहीं है और बहुत देर तक खरीदने वो पैसा को कमाने का दिल भी नहीं करता. So how do you blend your heart and your living in such a way that we are able to pursue a passion and simultaneously make money out of it, so that we can have a decent living and simultaneously enjoy a satisfactory, fulfilling life? So today I have with me my three very good friends who are into this profession, who they have followed their passion. We'll understand from them what is passion, how they have skilled themselves to be expert in the passion which they have pursued. Secondly, how they have marketed their work and how they have converted their passion to, you can say, as an entrepreneur. And that's what talks about passionpreneur. So an entrepreneur who works around their passion. I have with me Jolly Kotecha. I have with me Bansi Sangvi. I have with me Priya Anand Pariyani. I'll be sharing the screen so that when I'm introducing them, you are able to relate with them. So when it comes to Jolly Kotecha, as her name suggests, Jolly, she is an happiness coach. Yes, उसके नाम के साथ ही उसका passion जुड़ा हुआ है. She is an happiness coach, cognitive skills trainer. She's a circle head of Plexus Pristine. She has been in this field from last 21 years, a certified sound therapist, NLP trainer, child counselor, clinical hypnotherapist, and access bar facilitator. Her certificate course in NLP and reprogramming the subconscious mind are most successful programs till date, and she had trained around 100 participants so far. She has business and customized professional training center under the name Come Out of the Closet.
She's travel plus women. She's travel plus happiness women trip. She conducts travel plus happiness women trips, Tibetan singing bowl sound session, coffee dates as well. You can contact Jolly anytime, and I'm sure she'll be more than happy to help you out with your happiness. Yeah, in today's world, uh, we feel that happiness also needs counseling. हर बार दिल क्यों खुश नहीं होता, सब कुछ करने के बाद भी दिल खुश क्यों नहीं होता? So that's Jolly Kotecha with us. Then we have with us Bansi Sangvi. Again, Bansi is an artist. She's a multifaceted artist. So before coming to Bansi, I'll talk about Priya. Priya has joined us now. So coming to Priya, Priya Anand Priyani. She's welcoming all of us to her art world. She's one of the artists who has crossed contemporary as well as is more about, she has created her own signature mark, and she's more into figurative and abstract painting. Instead of introducing Priya, I think her work talks about her. So I'll quickly run through her work, and then how she has explored this entire signature style of hers, and how she has ensured that people also appreciate, understand, and simultaneously how she has contributed in the world of art, because she is one person who has got good number of accolades, awards, and people have really appreciated. Plus, she is volunteering to good number of exhibitions as well. So this is Priya Wonder, and that's where she talks about women. The feminine part of a woman. She has explored almost all part of women in a contemporary and abstract style. The third with us is Bansi Sangvi. Again, I said multifaceted artist, vibrant, as her name's studio suggests, vibrant sky. She's a textile designer and image consultant. She's very good with textile designing. She's a wonderful sari drapist. She also she's good into teaching through Zoom as well, online, offline, when it comes to Bansi. She has a very unique way of converting her passion into profession in such a way that not only by conducting workshops, but she has blended her art into image consultant. And that's how she tries to ensure that even in an individual or in a group, each and everyone enjoys to magnify their image and persona along with an artistic touch. She's designed many art products and paintings in various mediums. So the power of creativity and passion, and to perform and best in each and every field of life. She has won many awards and has colleagues, and she's very active with BNI as well. Mantra of her life in the end: dream it, believe it, achieve it. And Kyra by Vibrant Sky is one of the well-known name when it comes to the people who want to buy something which is individualized, customized, which goes with their personality and which adds Bansi's signature work in their own textile or at their home. So with this, we have such a wonderful, beautiful, soulful artist, all three of them. And I'm sure they are going to answer, but instead of asking all three one question, I'll focus on one person at a time so that we can understand their journey completely. So we'll start with Jolly, followed by Priya, and then followed by Bansi. So mainly I have discussed with them is what is passion, because it is very difficult to define passion, because and people are always in the, you can say, discovery mode to discover their passion, कि उनका passion क्या है, and कैसे पता करे कि उनका passion क्या है. So I'll be asking Jolly what is passion, how she has discovered her passion, and then followed by how she has converted her passion into profession, what kind of skills she has achieved so that she becomes a professional in real sense, and then how she is able to market her work so that she can not only earn money, but enjoy a lot of satisfaction as well. Over to you, Jolly. Thanks, Gitika. Thanks for this lovely introduction, and thanks for sharing with two wonderful artists, Priya and Bansi. Their work is excellent. And something that I like to share about why I call myself an happiness coach
is because my name is Dolly. And it took me 48 years to realize that I should have called myself an happiness coach long back. But then this is what happens when you actually follow your passion. So I'd like to share that I had a Dolly, lot of... can I interrupt before you start? Can you just Yes. remove that blurred wala background? Because Okay. Okay. I'll do that. I'll do that. just remove that blurred background because Yeah. वो strikingly bright Okay. हो रहा. Fine. This is better. You look nice. Yeah. Thank you. So like Gitika was telling passion. So what is a passion? You have to first recognize what is your passion. So very early in my life, I realized that I enjoy two things in life. That is books and dance. So whatever I used to do, I have found out that the passion of reading is one of the biggest passions of my life. And through books, so I'm talking about a generation where travel was only with family or travel was only for functions. I travel the world through books. So through books, the passion got developed to an extent of building confidence. So when you have a lot of information, you are actually able to understand also what others are expressing or talking. So I had my cousins who used to come from Muscat or US and all, and they would be surprised that I know much more. So this was a generation of not having internet. But then also I could understand where they're coming from or what is their culture. And that was only through books. So I realized that a person has to first, at a very early age, find out the passion. And everybody can find out their hobbies. So hobbies is how you find out your passions. So either it is singing or dancing or craft or knitting. So I find knitting also very good, or cooking, So that was my journey. Dance helped me to build the confidence that I always lacked. So now people assume that I'm a very confident person, but there was a time in my life that I was not very confident about how I look and how I talk and how I behave. When I used to dance, I used to shed off all my inhibitions. So this two combination definitely helped me to build what am I passionate about. So I was all set to become a chartered accountant, but I chose to have passion over my career. And I started with creative reading and writing workshops at a time when it was unheard of in India. In 2000, I had an online kids library called Mind Gym. So we used to send, books and toys and puzzles on rent to kids. And this is how I got connected with schools and colleges, where they approached me and they asked me, could children build an hobby? Is hobby something that comes naturally, or is developing an hobby a skill? And that's where my journey of exploring passionate things to give, for people to have it on the forefront. And I choose to visit schools and colleges in Ahmedabad and Mumbai, and I developed the skill of reading as an hobby. So parents used to come and ask me कि आप ग्रामर सिखाते हो, आप इंग्लिश बोलना सिखाते हो. I said मैं कुछ नहीं सिखाती, मैं सिर्फ बच्चों को ये कहती हूँ कि enjoy reading. So then that is how the creativity writing came up. And then I was approached by corporates because बहुत सारे adults मेरे पास आते थे, कहते बचपन में हम बहुत पढ़ते थे, बचपन में हम बहुत साइकिल चलाते थे, बचपन में हम बहुत स्विमिंग करते थे, अब हम नहीं करते, क्या हम वापस अपने पैशन को revisit कर सकते हैं? And I said yes. And that's where my journey of a corporate trainer started. So I was proudly associated with Zydus Hospital from 2015 to 2019, where I used to train people to, understand what is their passion and bring their passion in their work. So a lot of people can't change their profession, but they can add passion into their profession. So this is how my corporate training started. But over a period of time, I realized that the feel-good factor everybody gives. Every trainer or every person or every motivational speaker will give you feel-good factor for a certain amount of time. So when you are with them, when they are talking to you, you would feel nice. But when you go back to your workplace or your home, you come back to where you were. And that's where I understood the power of the subconscious mind. I understood that it is very important
to reprogram the files that are stored in your subconscious mind. And that's where my journey of learning a lot of therapies like clinical hypnotherapy and sound therapy and NLP. NLP is called neuro-linguistic programming and sound sessions. So the balance between your conscious and your subconscious mind is very important. Your conscious mind will always talk about money and about logic and about rationality and about analysis, but your subconscious mind will talk about colors and passion and what you feel and what you love. And this balance is very important. And I choose to take this forward. And when, like Gitika introduced it, paisa bahut zaruri, and I remember Jalpa also saying, thankfully, if you follow your passion, money becomes a byproduct. But if you follow money, that there is no guarantee that your passion will be the byproduct. So I choose a happier space of following my passion and choosing and spreading it out. So now the program that Giti was talking about, I would like to share something. So we do this 10-week program where we reprogram people's mind. We let them rediscover themselves. We let them create the balance between the conscious and subconscious mind. And believe me, आप कोई भी काम करते हो, you can add passion to your profession. So this is what I do. And yes, like Gitika mentioned, we take women in travel trips. So हमें ये पता चला है कि women all over the world, and it's not about India, let me tell you, women are people who take a lot of guilt of enjoying themselves. So we decided to come up with this concept of women and travel trips, and I give sound sessions in between of the nature. That's again a way of reprogramming your subconscious mind. And one more thing that I like to share is, आप कुछ भी करो, आप खुश नहीं होना, कोई मतलब नहीं. So first, search your passion, develop the passion, merge your passion with your profession, give lot of happiness to people around you. Just don't try your life to prove something or to achieve something. I mean, see, that is what your logical mind will again remind you, nahi, we have to prove ourselves and we have to train ourselves. People are going to notice you if you follow your passion. People are going to. So if you are out of the box, why fit into the box? And that's what I do. And I wish everybody a lot of happiness and a lot of energy and follow your passion. So Gitika, this is what I would like to share about what I do. Thank you. Gitika, you are on mute. So well, Jolly. That is, you spoke so well that yes, your reading converted into being a full-time trainer, and I just got to know that you wanted to be a CA. I mean, we could have been a CA, but this is by choice, and that's what it is all about. It's all about our choices, our exercising our choices. So when we exercise our choices, I'm sure, I know it so well that nothing will stop us from becoming who we wish to be and not what society expects us to be. You know, society has got a particular demand. It starts from the parents, it starts from the family, and then finally, अच्छा ये करना है तो इसमें क्या होगा? इसका future क्या है? I'm sure Priya has gone through all that. Being an artist, when she might have chosen to be an artist, parents would have expected her, or the society, forget about parents, but many a times we have so many kaka, mama, chacha around who will always ask, ki beta banna kya hai? The child is still exploring the world and the people start talking about future. So most of our Indians live in future. We don't live in present. We don't enjoy what we are learning, especially the process of learning, being in the school, enjoying all those hobbies that we are trying to explore. But we are always questioned about our future. Ki आगे जाके क्या बनना है? And at times I feel आगे जाके आगे देखेंगे ना, अभी तो ये कर रही हूँ ना. But yes, to answer that, I'm sure Priya would have talked about it when she talked about an artist. So the next question always comes is, artist बन के क्या होगा? इसमें कहाँ कुछ खाना का मिलता है उनको? You know, how do they manage themselves? So we have to answer all that question. A wonderful, soulful artist who has worked around feminine energy, who has explored all feminine emotions. Through her work, the way she has created her own signature mark. I've been seeing her since last 7 years, and I'm a fan of her work, I'm telling you. This is not trying to be very, I can say, egoistic.
but yeah, I like to say that sometimes following your own heart leads you to happiness instead of thinking about bank balance. But yes, how do you cross this heart to bank balance wala entire journey? Priya, I would like to listen to you. आपको भी पक्का ये सब चीजें सुनने को मिली भी होगी, and you can unmute yourself and share your journey, starting from how did you think to become an artist? When did you discover? When did you get to know that yes, this is what I want to do for my entire life, and how do you make living out of it? I know the way people love your work. How have you placed yourself in this art fraternity, and exactly what is this all about? How do you ensure that you are seen, your work is seen, people appreciate? Because studio mein rakhna kaam is not what is all about. Eventually happiness and satisfaction comes from people appreciating our work as well. So coming to you, Priya, if you can unmute yourself, and I have shown her work in the beginning itself. Her work speaks, and that's what Priya is all about. Priya, you can unmute yourself. Can you? Can the host unmute her, please? Can the host unmute Priya, Vishal, Jalpan? Yes, madam. Sorry. Can you please unmute Priya? Okay. Done. All right, Priya. Yeah. Okay. First of all, thank you, Gitika, and all people inviting us. जो डिस्कशन अभी चल रहा है, जोली और ये सब लोग चल रहा है, एज एन आर्टिस्ट भी हम लोग क्या फेस करते हैं, ऑलरेडी गीतिका ने काफी कुछ बता दिया है, आर्ट का सिनारियो क्या था। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सिनारियो हमारे टाइम पे जब से मैंने स्टार्ट किया था, तो मतलब आर्ट कुछ भी नहीं था, नथिंग। हम लोग सिर्फ जैसे कहते हैं ना, स्कूल टाइम से हम लोग खाली जो आर्ट कंपटीशन में पार्ट लेना, टीचर्स अप्रिशिएट करे, दैट्स ऑल। उसके ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता था। अभी जो सिनारियो है उससे बहुत ही अपोजिट था उस टाइम पे। बट उस टाइम पे एक ही चीज था कि लड़की है, चलो ग्रेजुएशन कर लो, डबल ग्रेजुएशन कर लो, मैरिज हो जाएंगे, इट्स ओके। इससे ज्यादा कॉमर्स साइंस करो, ये करो, यहाँ तक ही एक आता था। बट मेरा यही था कि मैंने स्कूल टाइम से बहुत ही मुझे पेशन था ड्राइंग का, ये करना था वो करना था, बट मैं स्टडी नहीं कर पाई थी। मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और मैंने एमकॉम तक पढ़ाई कर ली जैसे नॉर्मली लोग करते हैं उस टाइम पे। बट ये था कि एक यंग एज में मेरा जो आर्ट है ना, पैशन, वो जरूर काम आया था मुझे, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारा घर को एक डेकोरेट के पीस बनाना, इवन देन प्रोफेशनल वे में अगर आप चेक करो ना, तो उस टाइम पे लोग, मुझे आस पड़ोस के लोग, मेरे फ्रेंड्स आके मुझसे कुछ ना कुछ ड्रॉ करवा के जाते थे। कोई किसी को स्टिच करवाना है तो स्टिच करवा के फिर मुझे कहते थे यहाँ पे इतना पेंट करके दो। तो वो टाइम चाहे जो भी था, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मेरा पेशेंट मुझे कुछ ना कुछ दे रहा था। बहुत ही अर्ली एज में मैं कुछ अर्न कर लेती थी मेरे पेशेंट में से, मेरे स्टडी के साथ भी कर लेती थी। तो वो टाइम था कि मैंने स्टार्ट किया था, पढ़ाई भी खत्म किया, और मैंने फर्स्ट जब सोलो शो किया तो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के बेस पे किया था, तो मुझे कोई ज्यादा आर्टिस्ट लोग जानते नहीं थे। बट लकीली मेरे फर्स्ट शो में मैंने आई थिंक 4 पेंटिंग्स मेरे सोल्ड आउट हुए थे। सो मेरा पैशन वहां से स्टार्ट हुआ था, अर्निंग मेरा वहीं से स्टार्ट हो चुका था। एक बात है प्रिया, आपसे मुझे पूछनी है कि आपने जो सिग्नेचर स्टाइल जो अपना बनाया है, वुमेन को जिस फॉर्म में आप बताते हो और उसके वेरियस इमोशंस बताते हो, उसके वेरियस रिलेशनशिप बताते हो अपने काम में, हाउ डिड यू डिस्कवर दैट स्टाइल? बिकॉज आर्टिस्ट एक सिग्नेचर स्टाइल से पहचाना जाता है, जो मैं आपसे बात करते करते समझी हूँ। सो कैन यू जस्ट शेयर समथिंग अबाउट इट? एक्चुअली ना, मैं जब से मैंने मेरा ये जर्नी स्टार्ट किया था ना, तब से मुझे वुमन थीम मेरे माइंड में रहता था, क्योंकि मेरा फर्स्ट सोलो शो वुमन थीम पे ही था।
बट मैंने उस टाइम पे एकदम न्यू कमर थी, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं आर्ट मैंने स्टडी किया नहीं था। तो मेरा वर्क कुछ ना कुछ बोल रहा था, बट मुझे खुद को ये रहता था कि नहीं, ये कुछ आर्टिस्ट है जिनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। जैसे आप बता रहे हो कि आप अभी मेरा कोई भी स्टाइल देख के बोलेगा ये प्रिया है। उस टाइम पे मैं काम करती थी, बट क्या होता था, कहीं से रेफरेंस लिया, कहीं से इंस्पायर हुई, कहीं से कलर स्कीम कहीं से आई। बट मेरे 3 4 5 शो के बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, ये मैं कर तो रही हूँ, बट लोग मुझे कहीं भी नहीं जानेंगे जैसे कि अभी जान रहे हैं। मेरा काम कहीं भी पड़ा है, अब्रॉड में भी है, कहीं भी सोशल मीडिया पे कहीं भी आ रहा है, तो मुझे मैसेज आते थे कि प्रिया तुम्हारा काम है ये। तो वो चीज के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि नहीं, मुझे मेरा स्टाइल तो चाहिए ही चाहिए। वुमन थीम इट्स फाइन, मुझे करना ही है, बट मुझे उसके अंदर कुछ अपना डालना है। तो एक अपने किसी को भी टारगेट करते हैं या कोई चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो एक आंख बंद करके अच्छे से उसको हम देख सकते हैं। तो ये चीज मेरे माइंड में थी कि मैं एक ये स्टाइल करूंगी कि वन आई पे करूंगी फोकस। मैं हेलो। साथ में, हाँ नहीं आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको साथ में एक क्विकली आपका काम एक बार दिखा देती ओके हूँ, आप कंटिन्यू ओके। कीजिए। सो क्योंकि आप मैंने अपने क्या काम के किया बारे कि में बात कर नहीं, रहे मुझे मेरा स्टाइल चाहिए, वुमन भी चाहिए, उसमें मेरी कुछ अलग चीज चाहिए। सो मुझे टेक्सचर और थोड़ा मिक्स मीडिया में काफी इंटरेस्ट रहता था स्टार्टिंग से, बट मैंने किया नहीं था। मैंने ऑयल में ही काम किया, एक्रिलिक में किया। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ डालना है, तो मैंने पहले तो टेक्सचर का अच्छे से मैंने यूज किया। देन मैंने वन आई कंसेप्ट ये रखा कि वुमन है, इतनी पावरफुल है, उसको एक आंख बहुत ही काफी है दुनिया को समझने के लिए। देन मैंने वन आई वाला कंसेप्ट चूज किया। थोड़ा मैंने इस टाइम पे थोड़ा अलग काम किया। फिर मैंने बैकग्राउंड को मैंने लिया कि नहीं, एक वुमन है ना, एक बहुत ही शांत प्रिय है, जिससे उसको एक बहुत शांति चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। तो मैंने व्हाइट को ज्यादा मैंने टारगेट किया कि नहीं, मुझे व्हाइट कलर चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी कलर्स चाहिए। तो मेरी स्टाइल में आप कहीं भी देखोगे ना, तो बहुत सारे कलर्स भी होंगे, लेकिन उस पर एक व्हाइट से उसको मैंने वो चादर की तरह उसको ढक दिया है। दैट मीन्स कि वुमन के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ अंदर है, बहुत कलर्स है, बहुत उम्मीदें है, बहुत सारी चीजें, बट वो उसको कहीं हद तक कहीं से उसको ढक के रखती है। कलरफुल भी है और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी करती है। तो मेरा ये स्टाइल मैंने 2008 में, जब मैंने मदरहुड सीरीज मैंने सोचा था, वहां से मैंने ये अच्छे से मैंने सोच सोच के मैंने लेआउट्स किए, लाइन वर्क्स किए, और बाय गॉड ग्रेस ये मेरा स्टाइल हो गया और कंटिन्यू है, जो अभी तक वही है। थोड़ा कलर पैचेस चेंज होते रहते हैं जो भी है, बट ये मेरा स्टाइल, मतलब जैसे आप गीतिका तो आई नो के फैन है, और काफी लोग मेरी स्टाइल के फैन है। सो 2008 से मेरा ये स्टाइल मेरे माइंड में आया और स्टार्ट हो गया। दैट्स इट। हैं। वेरी लवली प्रिया, आपने जो बताया, जिस तरह एक्सप्लेन की अपनी पेंटिंग के फॉर्म को, एक चीज मुझे समझनी है कि पेंटिंग तो बन जाती है, आई नो इट इज नॉट आसान, मतलब ये स्टेटमेंट मेरा ऐसा रहा है कि पेंटिंग तो बन जाती है आप जैसे लोगों के लिए, लेकिन अगर आपके स्टूडियो के बाद पेंटिंग बाहर कैसे जाती है, अपार्ट फ्रॉम एग्जीबिशन, एग्जीबिशन कर लिया, लेकिन उसको कैसे मार्केट किया जाए, कैसे उसको कम्युनिकेट किया जाए, कैसे ज्यादा लोगों का फुटफॉल हो, कैसे लोगों को आके समझा जाए, उसके लिए आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, जरा आप वो शेयर कर सकते हैं? और आप कैसे कैसे एग्जीबिशंस के साथ इन्वॉल्व हैं, आप कैसे प्रमोट करते हैं दूसरे आर्टिस्ट को भी, जरा वो सब कैसे प्रिया फ्रॉम अ आर्टिस्ट टू प्रमोटर की तरह मेच्योर हुई है? हाँ, उसके लिए मैंने एक काम किया था, स्टार्टिंग लेवल से मैंने किया था। वहाँ उस टाइम पे ना गैलरीज हुआ करती थी, ये सोशल मीडिया का थोड़ा कम होता था। जैसे बीसीए गैलरी है दिल्ली से, मुंबई की कुछ गैलरीज थी, इवन दिन अब्रोड की ऑनलाइन गैलरीज थी, जहाँ पे विदाउट फीस हम अपना एंट्री, मतलब पेंटिंग्स अपने डाउनलोड अपलोड कर सकते थे। तो मैंने ना उस टाइम पे बैठ बैठ के काफी जगह पे मैंने अपना काम जाके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स में मैंने अपलोड किया। और मैं आपको बताऊं कि मेरा उस टाइम पे काम अमेरिका में, कनाडा में, ऐसी ऐसी जगह पे सोल्ड आउट हुआ था। मतलब मैंने मेरी ट्राई चालू रखी थी, मेरा पोर्टफोलियो कहीं पे इंटीरियर डेकोरेटर्स है, इंजीनियर्स है, उनके वहां मैं शेयर करती थी, कहीं पर्सनली जाके उनको वर्क दिखा के आती थी। और शोज में तो मेरा जैसे इंटरेक्शन होता था तो मैं हर डिटेल सबको दे देती थी। और ऐसे करके जो मैंने सोशल मीडिया थ्रू भी मैंने काफी मेरे पेंटिंग सोल्ड आउट हुए थे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अच्छा मेरे हिसाब से मेरे लिए लकी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने जब भी मेरा वर्क डाला तो मेरी बहुत इंक्वायरीज होती थी, और मेरे शोज में भी काफी वर्क जाते थे। हाँ, लेकिन मैंने जो
डायरेक्टली जो अपलोड करना था काम ऐसी सोशल मीडिया पे, ऐसी मैंने साइट्स पे बहुत ज्यादा मैंने टारगेट किया था स्टार्टिंग लेवल पे। देन उस टाइम पे मेरे काफी जगह पे ऐसे ही काम मेरे सोल्ड आउट हुए थे। अभी भी मेरे काम कनाडा में, यूएसए में, दुबई में बहुत जगह पे सोल्ड आउट हुए थ्रू दैट इंटरनेट मीडियम। सो ये मैंने ट्राई किया था और मेरा कंटिन्यूसली ये अभी मेरा जो जो पहले के जो जिस लोगों ने काम लिए हैं तो वाया वाया है, अभी मैं कई घरों में मेरे काम भी है क्योंकि मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है, सर्कल भी बहुत अच्छा है, काफी लोग मुझे प्रमोट भी करते हैं, मेरा रेफरेंस भी देते हैं। तो अभी भी बहुत बड़े बड़े जो घर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, उनके वहां मेरे बहुत सारी जगह पे मेरे काम लगे हुए हैं। सो या एक आप कुछ एग्जीबिशंस भी तो करती है ना, आप कुछ अच्छे एग्जीबिशंस जो हैं अहमदाबाद में, इंडिया में आप मैंने जहाँ पे गीतिका डिफरेंट आर्टिस्ट 21 को सोलो शोज किए हैं हाँ और अबाउट 90 ग्रुप शोज किए हैं। काफी मैंने कोऑर्डिनेशन किया है, कुछ शोज ऑर्गेनाइज किए, बहुत कुछ किया है। तो वही है कि जो मैंने एग्जीबिशन कनाडा में किया था वहां भी मेरा वर्क सोल्ड आउट हुआ था, मुंबई में किया वहां भी मेरा वर्क सोल्ड आउट हुआ था, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, मतलब ऐसा कोई सिटी नहीं रहा कि आई थिंक मैंने नहीं किया। एक बैंगलोर है जो मेरा पेंडिंग है और 21 सोलो शो में मेरा काफी वर्क गया है। तो या मैंने शोज काफी किए डेफिनेटली। तो ये सोलो शो और ग्रुप शो में, क्योंकि कई बार काफी आर्टिस्ट सोचते हैं कि भाई हम लोग सोलो में जाएं या वी वर्क इन अ ग्रुप, एग्जिबिट इन अ ग्रुप, सो उनका क्या फायदा, व्हाट आर द प्लस एंड माइनसेस ऑफ सोलो एंड ग्रुप वर्क? देखो, ग्रुप शो करना इट्स इजी, आप 2 या 3 काम करके आप कहीं भी जाके ग्रुप में शो कर सकते हो, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। बट अगर आपकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी आपको क्लियर करनी, जैसे कि आप मेरा 1 या 2 वर्क है, अभी आप मेरी स्टाइल जानते हो इसलिए आपको पता है कि प्रिया है। बट अगर मेरे साथ दूसरे 10, 12, 15 आर्टिस्ट है और उसमें मेरे 2 वर्क्स है, तो मे बी आप सब वर्क्स देखकर शायद मेरा 1 आध 2 वर्क्स देख के आप चले जाओगे, आपको क्लियर नहीं रहेगा कि प्रिया का कौन सा काम था। मेरा एक स्टेज के बाद आप समझ पाओगे, लेकिन इनिशियल वे पे अगर मैं, जैसे मैंने इनिशियल मेरा स्टार्ट किया था सोलो शो से, तो मेरे व्यू से सोलो शोज होने चाहिए फर्स्ट, क्योंकि कोई भी इंसान की एक स्टाइल समझने के लिए 1, 2, 4, 5, 10, 15 काम आप देखोगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये इस आर्टिस्ट का काम है। नो डाउट थोड़ा कॉस्टली रहता है सोलो शो करना, इट्स नॉट अ जॉब, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बोला और कर दिया, क्योंकि सोलो शो के लिए कम से कम आपको 20-25 पेंटिंग्स बनाने हैं और उसकी आपकी एक स्टाइल आपको मेंटेन रखनी है। मतलब सोलो शो ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसा नहीं है कि ये 2 वर्क्स अलग दिख रहे हैं, 2 वर्क्स इसके दिख रहे हैं, 2 इसके, ऐसा नहीं। सोलो मीन्स सोलो, जैसे मेरा वर्क है तो पर पूरा आपको प्रिया दिखना चाहिए। आपको पूरी गैलरी भी तो रेंट करनी पड़ती है, इतना कम्युनिकेशन करना पड़ता है, इतना फुटफॉल आए आपके पास आपका काम देखने के लिए, वो इतना एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, वो सब भी तो एक आता है ना एस्पेक्ट। सो हाउ डू यू मैनेज हम दैट? लोग हम लोग आर्टिस्ट लोग क्या बोलते हैं पता है, कि हम सोलो शो करना नहीं, एक शादी करने के बराबर, एक इवेंट होता है ना शादी का, वो उसके क्योंकि हमको प्रिपरेशन करना है कुछ, मतलब 8, 9, 10 महीनों तक काम करना है, फिर थीम डिसाइड करनी है, गेस्ट को डिसाइड करना है, कार्ड्स प्रिंट करने हैं, गैलरी बुक करके रखना है। गैलरी की भी 15,000 होते थे, अभी 18,000, 21,000, जहांगीर में आप देखो तो 30,000। मतलब ये जो अमाउंट है, जैसे एक सिंपल सा इवेंट करते हैं सोशल, तो उसमें भी अपने को 40-50,000 होते हैं। तो यही है कि सोलो शो में 1 लाख 150 ये इतना तो अमाउंट चला ही जाता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, पेंटिंग्स में जा रहा है आपको, गैलरी में, कार्ड्स प्रिंटिंग में, लोगों को इनवाइट करने में, गिफ्ट देने में। सो ये हमारे लिए एक मैरिज है, एक बहुत बड़ा इवेंट रहता है, इट्स नॉट इजी जॉब। इसीलिए लोग जो नए नए आर्टिस्ट है उनको जैसे बोलते हैं ना, 2-3 वर्क्स में उनको कॉम्प्रोमाइज करके ग्रुप में जाना पड़ता है। बट ग्रुप शो इज ओके, बट आपकी आइडेंटिटी करने के लिए आपको सोलो तो मस्ट है, सोलो करना ही चाहिए। तो ग्रुप से आपकी एक पहचान भी तो बननी शुरू हो जाती है, आपका फुटफॉल भी तो बढ़ जाता है, एंड एक्सपेंस भी शेयर आउट हो जाते हैं। हाँ देखो, इसमें क्या होता है, अगर आपका काम में दम है तो चाहे आप 15, 20, 25 लोगों के बीच में आपका काम दिखेगा। तो ग्रुप शो में भी क्या होता है कि एक लिमिट के बाद आपको सोलो पे आना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो आपका सोलो शो में दिखेगा।
सो आपको एक नए आर्टिस्ट के लिए ऑन द लास्ट नोट, ऑन द पार्टिंग नोट, न्यू आर्टिस्ट के लिए आपकी ओर से क्या एक छोटा सा टिप कहो या एक मोटिवेटिंग कोट कहो, या आपकी बात क्या आप बताना चाहेंगे? एक ही चीज है मेरे लिए, बी रियल। आप जो हो वो ही दिखाओ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि इसका काम अच्छा है, इसका सोल्ड आउट हो रहा है तो इसकी कॉपी करो, उसकी कॉपी करो। नो, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो आपका खुद का है, वो ही आप करो। और ट्राई करो, स्मॉल वे से आप करो, ग्रुप से स्टार्ट करो, बट आपका टारगेट एक सोलो का रखो और उसी को आप लगे रहो। लेकिन ऐसा है ना, शॉर्टकट मत लो जैसे आर्टिस्ट करते हैं। तो बस बी रियल, आपका जो आर्ट है वो रियल रखो, किसी से कॉपी वर्क मत करो। और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स इजी नहीं है। आप इस वर्ल्ड में आए हो तो ऐसा नहीं है कि आप आज आए हो और आप कल फेमस हो जाओगे या आपका अर्निंग चालू हो जाएगा, वो नहीं है। काफी काफी टाइम देना पड़ता है। जैसे हम जैसे लोगों को देख के कोई बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं हमने 20 साल डाले तब जाके ये नाम हो रहा है। सो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 शोज किए और आप सोचोगे कि अब हम फेमस हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो बी पेशेंट और थोड़े रियल रहो, बी रियल, बस ये मैं चाहूंगी। बहुत सही है। राइट फ्रॉम आंसरिंग द सोसाइटी कि आर्टिस्ट बन के क्या मिलेगा, टिल हियर प्रिया की जो जर्नी है बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में उन्होंने बताई है। आज हमारे साथ बंसी भी है मेरे साथ, एंड बंसी का जब अगर मैं बात बता रही हूँ तो शी इज अ मल्टी फेसेटेड आर्टिस्ट। मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत सारे मीडियम को एक्सप्लोर करती है, लेकिन उसने क्या आर्ट को वेरिएबल फॉर्म में बना दिया है कि it's not only to be put up on the wall, but it is supposed to be adorning it, and you can have your own customized art form which you can wear it, which talks about your personality, which talks about your moods, which talks about your event, which talks about you and what are your aspirations. So Bansi के साथ अगर मैं बात करूं तो she has explored art in various medium, and that is where she has equipped herself to be an image consultant, a drape artist, sari drape artist, and whatnot. So I had shared her work. If required, I'll share her work again. But she is also into taking art workshops with the corporates and women, and she's good with Zoom and online and offline both. Coming to you, Bansi, and the kind of background also you come from. How did you realize that you want to be an artist and explore so many medium? You are one who wants to explore everything. जो भी चीज हाथ में आई वहां पे आपको दिल करता है कि चलो उसको ही यूज किया जाए. Absolutely. So that's the kind of person you are, and I love to wear your artwork also. And thank you for gifting me such a wonderful dupatta that you gave it to me. That's one of my treasure piece. So talking about Bansi, passion. What is passion for you? How did you discover that? We'll go on that form, and then we'll come to how did you realize that you आपको अलग-अलग skills भी attach करनी है art के साथ. So आप एक artist बन के नहीं रहे जो आपके ही फॉर्म दायरे में रहे, आपने अपना होराइजन बहुत ज्यादा स्प्रेड किया है. So talking about your journey, Bansi, over to you, dear. Yeah, so thank you so much, Gitika Saluja, for inviting me on this Vyapaar Jagat platform. And I really love the Jolie has shared about the passion, what is passion. And I really love the Priya has also shared about her passion, and really love both of her. And now I would love to share my journey, how I've achieved my passion. Can you, am I audible, Gitika? You are audible, Bansi. Just थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ ताकि आपका head cut ना हो बस. Yeah. Now is this fine? That's better. Yeah. Thank you. So, Gitika, so my passion is when I am derived when I was very small. I born and brought up in Bombay, Gitika, and all. So in vacation जब होता था तब mom and dad हमेशा मुझे ऐसे ना संस्कार देते कि you have to use your time in a very proper manner. Vacation में खेलो भी सही friend के साथ, लेकिन you have to need to explore your identity और passion also कि आपको क्या अच्छा लगता है बेटा. तो मम्मी हमेशा मुझे अलग अलग क्लास में भेजती थी, और ना धीरे धीरे मुझे पता चला कि I love to do the creativity. तो धीरे धीरे मैंने काफी क्रिएटिव क्लासेस बॉम्बे में सीखे थे वर्कशॉप्स के अंदर. Then I got married to Ahmedabad
in 1991. So or I did my BSc textiles clothing and designing from one of the best college in Mumbai. Then I got married to a businessman who is also manufacturing of weaving machines. टेक्सटाइल मशीनरी हम लोग बनाते हैं. तो तब जब बातें करते थे ना, मेरे हस्बैंड बातें करते थे कि टेक्सटाइल में ऐसा होता है, ये होता है, तो मुझे जब तब से एक पैशन था कि आई वांट टू क्रिएट माय प्रिंट्स, बिकॉज मैंने ये स्टडी किया था कॉलेज में बॉम्बे में. तो मुझे तब, लेकिन शुरुआत थी ससुराल में, तो ना एक जॉइंट फैमिली भी था, सो आई कुडंट गेट टाइम टू क्रिएट माय बिजनेस. बट एट द सेम टाइम फैमिली में एक फ्रीडम भी थी. तो हेमांग और मेरे मदर इन लॉ और या सिस्टर इन लॉ मुझे ऐसे बताते हैं कि जो भी करना है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम, के घर के अंदर आप मैनेजमेंट करते करते यू कैन स्टार्ट. लेकिन आप बाहर का थोड़ा ना डिफिकल्ट था कि मैनेज करना. सो घर में टीवी देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगा. सब लोग देखते थे, मैं आई डू नॉट लाइक टू वॉच द टीवी. सो फ्री टाइम में मैं क्या करती थी, जब किचन में काम हो जाता था, सब कुछ काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती थी, व्हाट आई यूज्ड टू डू इट, आई वुड लव टू डू द डिफरेंट पेंटिंग्स करती थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आजू बाजू में नेबर्स के प्रोजेक्ट करती थी. फिर देन मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि आई विल स्टार्ट माय आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस. सो आई हैव स्टार्टेड माय आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, एंड धीरे धीरे वो एक अच्छा सबको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा. और तो फिर मुझे ऐसे लग रहा कि दिस इज समथिंग, क्रिएटिविटी है मेरे पास, आई वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट. सो आई हैव एक्सप्लोर्ड I've started, I want to explore. So I've started glass diploma, wood diploma, fine arts during these years. So मुझे ऐसे लग रहा है कि I want to create identity as an artist. So I've learned all these diploma courses, which is very professional course. And I've learned from one of the renowned institute of Ahmedabad. And so मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे करना है, आगे करना है, but I don't want to be एकदम typical artist मुझे नहीं बनना है. I want to create something very different and explore different mediums. तो मैंने ये सब courses किए, professional courses, which helps me a lot. And मेरी जो एक मेरा बेस था वो एक स्ट्रॉन्ग हो गया. और धीरे धीरे घर की जवाबदारी के साथ मैंने वो भी एक आइडेंटिटी क्रिएट की. और जो मेरे मेंटोर थे आशा मंडपा, so आशा मंडपा ने मुझे बताया कि why don't you start teaching, you are so good at teaching also. So I've started giving training to the students also. And लगभग मैंने 8 to 9 years मैंने as a art faculty भी काम किया इंस्टीट्यूट के अंदर. फिर ड्यूरिंग दिस टाइम्स बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, और तो भी मैंने जो एक पैशन थी मेरे अंदर, क्रिएटिविटी और कि मुझे कुछ करना है, आई वांट टू क्रिएट माय आइडेंटिटी. और हमेशा बोलते हैं ना, मम्मी पापा के संस्कार हमारे दिमाग में रहते हैं. ये तो मुझे वही था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है. और जब मैरिज हुआ तब मम्मी पापा ने बहुत एक अच्छा सा लेटर लिख के दिया था कि बेटा, भले आप बॉम्बे से अहमदाबाद जा रहे हो, बट यू नीड टू क्रिएट योर आइडेंटिटी. एक सोसाइटी में अपने एक स्पेस बनानी है. ऐसा नहीं है कि आपको वहां बॉम्बे से अहमदाबाद जाते हो तो एक लेडी वुमन की तस्वीर तो हुई, लेकिन एक स्त्री की गरिमा क्या है, एक आइडेंटिटी आपकी क्रिएट करनी है ना. तो वो गरिमा कैसे क्रिएट हो जाती है, आपकी पैशन है, आपके अंदर जो कोई भी पैशन हो, वेदर इट इज इन किचन में होती है, या कोई भी क्रिएटिविटी में होती है, या आपके कोई फाइनेंस में आपका कोई कुछ भी होता है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट्स फर्स्ट, and then choose your passion and choose your profession. And इसी हिसाब से मुझे लगा कि this is, ये जो मैंने ग्लास सीखा, वुडन सीखा, तो हमेशा जब मैं अपने सेल्फ के साथ बेचती थी तो मुझे एक आइडेंटिफाई, एक पैशन होती थी कि नहीं, मेरे पास ये भी अंदर है, और ये भी मैं ग्लास का भी मीडियम, मैं ग्लास में भी काफी कुछ क्रिएट कर सकती हूँ. वुड का भी है तो मैं वुड में भी काफी कुछ कर सकती हूँ. फैब्रिक का भी है तो फैब्रिक में भी काफी कुछ कर सकती हूँ. टेराकोटा है तो टेराकोटा में भी काफी कुछ कर सकती हूँ. तो ये धीरे धीरे आई हैव एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट मीडियम्स थ्रू आउट दीज इयर्स. एंड धीरे धीरे ये प्रोडक्ट सीखने के बाद मैं स्मॉल प्रोडक्ट्स भी बनाती थी और एग्जीबिशन में पार्ट लेती थी. और धीरे धीरे ये साइमल्टेनियसली जब बच्चे भी हुए, तो ये बच्चे का ध्यान रखते रखते ये सब जितने भी कोर्सेस मैंने किए थे, तो एक माइंड में क्लियर था कि आई वांट टू यूज ऑल स्किल्स इन माय जर्नी, और मुझे वो करना है. ऐसा नहीं है कि चलो सीख लिया,
जाने दो, ये पास्ट को जाने दो, लेकिन वो एक ना क्लैरिटी थी मेरे माइंड के साथ कि व्हाट आई वांट टू डू इट एंड हाउ आई कैन नो क्रिएट माय पर्सनालिटी एंड हाउ आई कैन अर्न इट फ्रॉम माय पैशन। वो बहुत क्लैरिटी थी मेरे साथ। और धीरे धीरे भले, और वो भी एक साथ में था कि बच्चे मेरे हैं, बच्चे को ऐसे, मुझे बच्चे को भी आगे करना है, राइट। तो धीरे धीरे बच्चे, नो, फर्स्ट प्रायोरिटी माय हाउस, सेकंड प्रायोरिटी माय चिल्ड्रन एंड थर्ड प्रायोरिटी इज माय पैशन, राइट। सो हमेशा वो प्रायोरिटी ऑफ माय टाइम मैनेजमेंट, वो मॉर्निंग टू नाइट मैंने वो पूरा प्लान करती थी इन द बिगिनिंग ऑफ माय इयर्स। एंड अभी भी, अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अभी वो सीन, आई हैव developed this habit throughout the years ke how I'm use my times from since my morning to evening. So that is what, क्योंकि ladies it's a ना काफी जवाबदारी होती है घर के अंदर, सब कुछ होता है, बट नो हर एक हमारे इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशन है कि ना वुमन हैज टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भले बोलते नहीं है, बट वी नीड टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे माइंड में वो भी था कि मुझे जो करना है वो मुझे, आई वांट टू क्रिएट माय आइडेंटिटी एज एन आर्टिस्ट, टेक्सटाइल डिजाइनर एंड इमेज कंसल्टेंट। वो सब कुछ, ये मेरी जो डिग्री है, आई वांट टू फुलफिल ऑल द डिग्रीज इन, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मुझे अर्न भी करना है एज एन आइडेंटिटी, एज अ फाइनेंस, एवरीथिंग इज क्लियर कि मुझे वो तो करना है टाइम के। भले बहुत से क्या होगा, मैं एस्टेब्लिश और नो लेट होगी ना, इट्स फाइन, बट दिस इज माई, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई जर्नी एज अ ह्यूमन बीइंग कि ये सब कुछ घर की जवाबदारी, चिल्ड्रन की जवाबदारी, और ये मेरी आर्ट की एक पैशन है। आई वॉन्ट टू नो क्रिएट सम स्पेस इन द सोसाइटी। और धीरे धीरे ये सब कुछ हुआ, और नो काफी अच्छे फ्रेंड्स मिले अब जैसे, जो हमेशा बूस्टअप करते, मोटिवेट करते कुछ करने के लिए। तो हर एक में से कुछ इंस्पिरेशन लेना, सीखना और आगे बढ़ना, दैट इज माई एक अंदर की एक ना जर्नी है, और मैं उसी हिसाब से फॉलो करती हूँ। और काफी ऐसा फिर ना धीरे धीरे हर एक, अभी भी स्टिल आई लाइक गिविंग ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। तो मुझे कहीं से कॉर्पोरेट में से भी काम आता है, इंडिविजुअल भी काम मिलता है, और साथ में मुझे ये वेरिएबल आर्ट, सो नो मैंने जो इमेज कंसल्टिंग में सीखा है, और मेरा टेक्सटाइल का भी नॉलेज है, आई डिड माय बीएससी टेक्सटाइल, तो वो भी क्लियर था कि मुझे आई वांट टू क्रिएट माय प्रिंट्स एंड आई वांट टू क्रिएट नो स्टाइल्स दैट सूट्स द डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट बॉडी शेप्स। और वो उस हिसाब से कई लोग आते हैं कि मुझे अपनी डिजाइन्स बनानी है, तो आई विल हेल्प देम टू क्रिएट देयर डिजाइन्स एंड आई विल हेल्प देम टू डेवलप देयर डिजाइन्स ऑन द फैब्रिक ऑल्सो and in different medium also. That is my forte and I'm enjoying my journey, Geetika. Very lovely, Bansi. You know, आज हमारे पास जो तीनों जन हैं, ऐसे हैं जिन्होंने, they are all women, and एक सवाल का जो जवाब सब तीनों ने अपने तरीके से दिया है कि घर की जवाबदारी के साथ साथ, यू नो, बिकॉज आई नो प्रिया भी अपने पेरेंट्स को बहुत संभालती है, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत संभालती है, सिमिलरली जॉली एंड बंसी। सो ये जो है, एज अ वुमेन, यू नो, इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद द मेन, how do we create our own identity which is following our own creativity and communicate with the society that this is who I am, this is what I want to do, this is what I like to do, this is what I love to do. And the moment we feel that this is what I love to do, I'm sure the society also starts loving what we are doing. And on this note, this is such a wonderful, one of the very good panel which I enjoyed being a part of, is Passionpreneur. So how do you convert your passion to your product, to market it and earn your livelihood? And most important is not only just earning livelihood, earning peace, earning satisfaction, and earning lots and lots of love and admiration of the society. So on this note, I will really like to thank Vyapaar Jagat, the platform, for creating such a wonderful, I know this is again one of the passion of Dr. Praveen Parmar. Vyapaar Jagat is a baby out of passion. So I'm sure this would be understood it so well by the team as well of VJ. And on this note, I would like to thank each and everyone who is there watching us, who would be watching us in the future. And have a nice day. Enjoy your day. Love what you do and do what you love. On this note, Jalpan, over to you. And I'm Gitika Saluja. Thanks a lot.
Thank you, Gitika ji. It was wonderful hearing the story of each of the passionpreneurs here. Even I know about you a lot because I've been reading things across for you. So you are yourself one of the passionpreneur, and I am really privileged that we have such women because we never have to keep igniting that light of passion within you so that you can move forward until when you wish in a long term entrepreneurship if we go and look upon. So this is how कि अंदर की आग को मरने मत दीजिए, इसे जिंदा रहने दीजिए, इसे दफनाइए मत, इसे जलाइए मत, उसको जलाते रहने दीजिए ताकि जब सही मौका होगा you can make a difference not just in your life but in the life of people whom you are connected and you are surrounded by. Wonderful session, wonderful Bansi ji, Priya ji, Jolly ji, and thank you for sparing your precious time with us. And if you audience have not yet nominated yourself for Fempreneur 2023 held at AMA Ahmedabad on 19th of March 2023. Please do go and nominate yourself. Please go and click on the link below where there is a nomination link and fill up all your details there, and we'll get a team will shortly connect you. Thank you once again, everybody. My Thank you. heartfelt gratitude to each and everybody